ओके, गुड इवनिंग एवरीवन. हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे? क्या हाल है आप सभी के? जल्दी से गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स. इफ द साउंड इज क्लियर, टाइप सी इन द चैट बॉक्स एंड वी शैल स्टार्ट आवर डिक्टेशन. चलिए, ओके, आई हैव गॉट कंफर्मेशन. चलो सही है, बढ़िया. तो गाइज, वेलकम बैक टू आवर वीकली लाइव सेशन ऑफ स्पीड बैच. मंडे को ये क्लास यूट्यूब पे होती है, जहाँ पे हमारे सारे के सारे स्टूडेंट्स, यूट्यूब की पूरी फैमिली 19,000 के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं, सभी लोगों को मौका मिलता है दैट दे कम लाइव इन दिस क्लास. ठीक है. एंड इसके बाद में कल से ट्यूसडे से ये क्लास आपकी गूगल मीट पे होती है, जहाँ पे आई 1-to-1 मीट एंड नो ईच एंड एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट. आपके जो भी डाउट्स रहते हैं, आपके जो भी क्वेरीज हैं, पर्सनली आई क्लियर इट. एंड यहाँ पे हम डिक्टेशन लिखते हैं. ठीक है. आज हम लोग करने वाले हैं प्रोग्रेसिव मैगजीन. ठीक है, हमने पिछले वीक स्टार्ट की थी. सो आज हम लोग प्रोग्रेसिव मैगजीन के 2 और डिक्टेशन करेंगे. दिसंबर वीक की मैगजीन चल रही है. ठीक है. बाकी सॉफ्टवेयर पे ऑलरेडी आपके पास में कैलाश चंद्रा के वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. डिक्टेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होगी, अराउंड 80 to 90 वर्ड्स पर मिनट के बीच में रहने वाली है. ठीक है. चलिए शुरू करते हैं गाइस. गेट रेडी एवरीवन. डिक्टेशन स्टार्ट्स इन 5 सेकेंड्स. प्लीज बी रेडी. Steno School Progressive Magazine. 3, 2, 1, start. Sir, the emphasis is on the public sector, which the Prime Minister described as a core of the industrial sector as well as of the plan. It was said that the public sector was being decried. The budget speech and the policies formulated establish that the public sector is the commanding height of the economy for us. In order to achieve that position, the public sector is being reinforced in many ways in the economy. In first 3 years of the 7th plan, a record 63% of the total 7th plan outlay in real terms has been provided. If you compare with the earlier 6th plan, it was 45%. This in the real terms and not in financial terms. This is an important aspect. This is despite the fact that there is an enormous compulsion of the increase in the non-plan expenditure. The 3 sectors, the defense expenditure, the large mounting interest payments, and the compulsory subsidies which provide to maintain the public distribution system, or the rural sector or the fertilizers mainly account for 70% of the total non-plan expenditure. It will be 67% in the current year. It will be 70% of the total non-plan expenditure in 1997-98. Therefore, despite all these mounting figures, the credit goes to the sound policies of good management, fiscal management of the government, that they have been able to maintain a momentum of the outlay in the public sector
to 63%, which is a record at all times. In the public sector, industrial sector, the emphasis is on modernization, accountability, management, increasing productivity, and several other measures. The most worrying aspect of the present situation is the mounting deficit. The Prime Minister has said that he does not like it, and he has, in a very unusual manner, given a commitment to the House and to the country that the planned deficit envisaged in the budget proposals will not be increased. Only a man of great confidence, only a man of commitment can give this. The fact are that in the preceding year or in the years earlier, the budget deficit has increased enormously. He has gone in taking a number of measures. If I may say so, the Prime Minister has expressed a grave concern in his budget speech. If you see the structure of the budget, the revenue receipts and the capital receipts, the expenditure is being financed more and more from the capital receipts. The non-plan expenditure being financed even more by the capital receipts. These are the concerns that have been expressed, and therefore not only has the Prime Minister given a commitment, but he has also provided inbuilt mechanism to control deficit. For example, the budget deficit will not be allowed to increase. Firstly, he has mentioned about the setting up of a cabinet committee to monitor it regularly. Then, that there is no room for wastage. There is no room for ostentatious expenditure and no room for unproductive expenditure. Thirdly, the public sector must generate resources more than what it is doing. Then, there is the cost benefit ratio being established. Every rupee that is now spent must give maximum results. Financial outlays must match the achievement of physical targets. Marrying the financial outlays and the achievement of the physical targets is a very important phenomenon, and I commend the government for giving emphasis to this end and making inbuilt arrangements, inbuilt mechanisms to achieve this. Another important factor is the cost of delivery programs. We are going to spend a large amount, rupees 2000 crores, on the anti-poverty program, which is a very important program. But there have been reports from the implementation ministry or the implementation machinery that the program is not being implemented in the manner it should have been and not producing the desired results. It is therefore very important that the cost of delivery of these programs is reduced and we are able to produce better results, and we are able to achieve our ultimate aim. In the present situation, we are having such a large phenomenon of expenditure
astronomical public expenditure, and in order to have a control over expenditure, it is necessary to create a situation in which the entire financing of the scheme becomes non-inflationary. It is very important to control the expenditure. It is also important to see that for every rupee spent, we are able to produce maximum benefit. Another innovation has been the introduction of quarterly budgeting. There is zero-based budget, and the entire policy of subsidy that is being given to that. It must reduce overheads. For that, it is necessary that there is a mechanism of quarterly budgeting, and that has been introduced with a purpose, and it is not that a cut in expenditure on certain items here and there is going to help. What is going to help is something else. Full stop. Alright, so this was a speed of 88 words per minute. 88 WPM की स्पीड थी आप लोगों की. प्रोग्रेसिव दिसंबर मंथ की मैगजीन. कैसा लिखा गया गाइस ये मैटर बताइए. हाउ मच वॉज योर एक्सपेक्टेड स्कोर, मतलब इस मैटर को कितना आप लोग लिख पाए बताइए. कितना परसेंटेज, जैसे 800 वर्ड्स थे तो 800 में से किसी ने 400 लिख पाए, कोई 500 600 लिख पाए, तो आप उसके हिसाब से अपना परसेंटेज बताइए, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आप लोग का परफॉर्मेंस कैसा था. ओके, सो RK00YT पता नहीं क्या नाम है 60 70, प्रियांशु श्रीवास्तव 75, गौरी 80 एंड शक्ति मीना 75, चाहत 83, अनु 90, अन्वेषा 95, देवस्मिता 80, श्रुति शर्मा 90, अचल 95. वाओ ग्रेट, चलो बढ़िया है. सभी के स्कोर 60 70. 60 वाले थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको. दोबारा लिखिएगा इस डिक्टेशन को, ठीक है. सिंस डिक्टेशन ऑलरेडी आप लोग के पास यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, सो यू कैन क्लास खत्म होने के बाद में आप दोबारा से डिक्टेशन को लिखिए. 1x की जो स्पीड थी, जैसे मान लो 90 WPM मान लो, इस डिक्टेशन की स्पीड 90 WPM थी, ठीक है. तो 1x की स्पीड आपकी 90 WPM की है. अगर आप उसको 1.25 करोगे तो वो आपकी स्पीड एक 15 से 20 वर्ड पर मिनट बढ़ जाएगा, मतलब 100 WPM के आसपास हो जाएगी. तो जिसको स्पीड बढ़ा के लिखना आप बढ़ा सकते हो, जिसको 90 को कम करके 75 करना है, 70 करना है, तो आप थोड़ा सा स्पीड कम भी कर सकते हो. दैट इज द ऑप्शन अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ठीक है. पटना हाईकोर्ट स्टेनो का एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है इन स्पाइट ऑफ करेक्ट पासवर्ड. ओके, तो कुछ सर्वर में एरर होगा. आप कोशिश करते रहिए, रात को एक थोड़ा लेट नाइट को कोशिश कीजिए, सर्वर में कुछ इश्यू होगा. नहीं तो आप दूसरे कोई ब्राउज़र वगैरह ट्राई कीजिए, वहाँ से हो जाएगा. लाइक गूगल क्रोम के अलावा आप कोई दूसरा ब्राउज़र ट्राई करो, वहाँ से हो जाएगा, ठीक है. शुभ शुक्ला, ओके, 500 से 600 वर्ड से लिख पाए आप, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास तो सॉफ्टवेयर का एक्सेस है. सो आज इस डिक्टेशन को आपको इस स्पीड पर दोबारा से एक बार लिखना है और ट्रांसक्राइब करना है. एंड देन व्हेन यू ट्रांसक्राइब, उसके बाद में आपको स्कोर मिलेगा, उस स्कोर का आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है. एंड उसके बाद में दोबारा से जो आपको बताया जाएगा वो आपको काम करना है. दिस विल गो ऑन फॉर नेक्स्ट 4 वीक्स, ठीक है. 4 हफ्तों में आपके आज 500-600 वर्ड्स है ना. अगले लाइव क्लास में आप दोबारा जब आप मंडे को आएंगे ना, तो यू विल सी पूरा हफ्ता आप स्पीड बैच में भी पढ़ाई करेंगे,
तो अब देखेंगे अगले हफ्ते आपका इंप्रूवमेंट ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो दैट वाज अ ग्रेट क्लास गाइज। इसके बाद में आज हम लोग लीगल क्लास में भी मिलेंगे, और लीगल क्लास के साथ ही साथ में एक 500 वर्ड्स का स्पेशल मैटर होने वाला है। लाइक यू ऑल नो, स्पीड बैच में हमेशा होता है, आज मैं यहाँ पे लाइव भी करवा रहा हूँ। सो 500 इंपॉर्टेंट वर्ड से हाई स्पीड पे होगा वो मैटर। जनरल वर्ड्स के मैटर होंगे, जो आपकी जनरल डिक्टेशन होता है नॉर्मली, ऐसे टाइप के मैटर्स, तो उसमें भी आप लोग को उस क्लास में भी आना है, ठीक है। चलिए, मैं इसको अपलोड करता हूँ आपके आईडी पे, जिसको ट्रांसक्राइब करना यू कैन गो हेड। बाकी लोग लीगल क्लास में और नेक्स्ट वाली क्लास के लिए वेट करेंगे, ठीक है। चलो, सारे लिंक्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। चलिए।